Now, what is the need of nervous system? A question arises. What is the need of nervous system in your body? The nervous system in our body performs the following major actions. Number one, keeps us informed about our outside world through the sense organs. Just like we have already read that it awares us about the external surroundings. So nervous system helps you through the sense organs about all kind of changes which are held out in your external environment. Number two, enables us to remember, to think, and to reason out. It ensures to create memories in your mind. It enables you to create memories in your mind so that you can remember those memories. By the nervous system, you are able to think at a large scale, think about those small things or a large thing related to your studies, and to reason out. uh, by nervous system, by ability of the nervous system, you are able to clear your doubts, clear your questions related to the studies or related to outside world, to reason out why this happens and how this happens. Control and harmonies are all voluntary muscular activities. So nervous system कंट्रोल करता है और हार्मोनाइज करता है आपकी सारी वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़ को. व्हाट डज वॉलेंट्री मीन्स? विच occurs according to your will, which can control by your will, जो आपकी इच्छा से हो सकता है. उन सब एक्शंस को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम. जस्ट लाइक रनिंग और इवन होल्डिंग दिस बुक in your hand, you can run. That is a voluntary muscular activity. You can run by the command of the nervous system. Nervous system controls that. Or even holding this book in your hand while you are reading it regulates the involuntary activities such as breathing or beating of the heart. So not only the voluntary activities are handled by the nervous system, in fact involuntary activities also regulated by the nervous system, such as which involuntary activities? Breathing, beating of heart. These are not under our control. That's why they are known as involuntary activities. Without our thinking, we cannot think for the beating of our heart, we cannot think and breathe. It's not under our control, and these all activities are regulated by, controlled by the nervous system. Then we came on the topic neuron. What is neuron? What is nerve cell? Nervous system composed of neurons, a long chain of neurons. Our nervous system consists of brain, number one part, 2 spinal cord, 3 sense receptors, and whole lot of nerves. There are a long chain of nerves in your whole body which is spread out to carry out signals, to send messages. The brain and spinal cord are made up of neurons और nerve cells. ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो आपकी है वो बनी होती है न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स की. सो लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट दीज सेल्स, न्यूरॉन्स, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स structure of neuron. The three main parts of neuron are the cell body, dendrite and axon. These are parts of neuron. Number 2, not this one, dendrite. Number 3, axon. The cell body, other names of cell body are perikaryon or cyton. Peri means surrounding, karyon means nucleus. It contains a well-defined nucleus. I will show you in the diagram. It contains a well-defined nucleus surrounded by granular cytoplasm. There is a nucleus which is surrounded by granular cytoplasm. This is your cell body. This whole thing is your cell body, and this is nucleus inside this, and there is filled granular. Granular means दानेदार cytoplasm इसमें भरा रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ. इट हैज़ ऑल सेल ऑर्गेनलीज. इसमें सब सेल ऑर्गेनलीज होती हैं जो आपके बाकी सभी सेल्स में होती है. यू कैन मैंशन ऑल दोज सेल ऑर्गेनलीज हियर ऑल्सो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओनली सेंट्रोसोम इज एब्सेंट. मेन क्वेश्चन, सेंट्रोसोम इसमें नहीं प्रेजेंट होता बिकॉज नर्व सेल्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. क्योंकि नर्व सेल्स डिवाइड नहीं हो सकती हैं, एंड for dividing cell is required centrosome. So centrosome is absent here because nerve cells have lost the ability to divide. They cannot divide to produce 2 nerve cells. Dendrite, these are branched cytoplasmic projections of cell body.
from here, if you draw the branches just like that, then these are called dendrites. ये branched cytoplasmic projection होती हैं सेल बॉडी की. They conduct nerve impulses to cytone. तो ये nerve impulses यानी messages को cytone तक लेकर जाती हैं. Axon. This is the structure of neuron. Axon. These are axon here. Axon, it is a long process, very long process from cell body. सेल बॉडी से निकल रहा है, ये लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है. इट वेरीज इन साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू इवन मोर देन 1 मीटर इन लेंथ. नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज हाउ लॉन्ग इट कुड बी. In most neurons, the axon is surrounded by white insulating sheath. न्यूरॉन axon के साइड में इस तरीके से एक कवर बना रहता है which is called sheath. Myelin sheath, its full name, or medullary sheath, which is covered by an outermost thin sheath called neurolemma. इसके बाहर एक और कवर रहता है which is called neurolemma or neurilemma. The myelin sheath shows the gaps throughout the length. myelin sheath के बाद में एक एक्सॉन यहाँ पर फिनिश हुआ, फिर यहाँ अगला एक्सॉन. एक्सॉन इज़ वन बट माइलिन शीट जो है वो थोड़ी थोड़ी गैप के बाद नई नई माइलिन शीट डिस्कवर करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं. एंड गैप बिटवीन द माइलिन शीट इज़ नोन एज नोड ऑफ रेनवीर. सम एक्सॉन्स मे हैव साइड ब्रांचेस कॉल्ड कोलैटरल्स. कुछ एक्सॉन्स की साइड ब्रांचेस भी होती हैं, उन साइड ब्रांचेस को कोलैटरल कहते हैं. द एंड पोर्शन ऑफ द एक्सॉन हैव स्वोलन एंड्स लाइक बल्ब्स. जो एंड पोर्शन है एक्सॉन्स के वो फूले हुए होते हैं, स्वोलन सूजे हुए होते हैं बल्ब की तरह. विच स्टोर सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. उनके अंदर केमिकल स्टोर रहता है जिनको न्यूरोट्रांसमीटर यानी मैसेज ट्रांसमिट करने में ये केमिकल्स आपको हेल्प करते हैं. Axon terminals are closely placed near the dendrite of another one or more neurons but are not connected. Such gaps in between are called synaptic clefts. Axon के जो terminals हैं वो closely placed near the dendrite. उसके बाद यहाँ पर ये dendrite बना हुआ होता है, ये dendrite के पास होते हैं but are not connected. पर ये connected नहीं होते. Such gaps between all the neurons are called synaptic clefts. Some basic terms in nervous activity: stimulus, an agent or a sudden change of external or internal environment that results in change in an organism or any of its body parts. Light, sound, heat, pain, hunger. Stimulus क्या है? आपके आसपास में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का जो चेंज हो रहा है दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म या उसका बॉडी पार्ट जो है वो कुछ चेंज शो कर रहा है. लाइक आपकी एक्सटर्नल सराउंडिंग में कोई लाइट आ रही है देन योर आई रिएक्ट, साउंड आ रही है देन योर ईयर रिएक्ट, हीट आ रही है देन योर बॉडी रिएक्ट, पेन फील हो रहा है देन योर बॉडी रिएक्ट. दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस. एंड हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. Change in an organism resulting due to stimulus. Due to that exchange in external surrounding or internal surrounding, how your body behaves, how your body reacts is called response. Impulse, a wave of irritability. You are irritated by anything, electrical disturbance that sweeps over the nerve cell. जैसे मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं, मैसेजेस आर ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, दोज आर कॉल्ड इम्पल्स. रिसेप्टर्स, द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल which on receiving the stimulus set up waves of impulses towards the central nervous system. कुछ एपिथेलियल सेल्स आपकी बॉडी में, स्पेशल एपिथेलियल सेल्स ऐसी रहती हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, इम्पल्स को सेट करती हैं एंड देन उसे CNS के पास भेज देती हैं. CNS ऑफ वेरी काइंड, फोटोरिसेप्टर्स विच react towards light, phonoreceptors which react towards sound, thermoreceptors which react towards temperature, olfactory receptors which react towards smell. Like your all sense organs have receptor cells which are called receptors. Effectors, muscles of glands which on receiving the impulse from the brain or spinal cord contract or secrete substances. आपकी बॉडी में कुछ ऐसी मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं जो इन इम्पल्सेस को रिसीव करके ब्रेन से या स्पाइनल कोड से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं.
या फिर कुछ सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती हैं. दोज आर कॉल्ड अफेक्टर्स. दैट मीन्स विच आर अफेक्टेड बाय receptors. Those are called effectors. That's all for today.